Good morning to all of you. Welcome to Unacademy. So in today's class, I'll discuss one of the important topic on left wing extremism. So before that, these are some important information about the Unacademy platform. You can crack OCS with India's largest learning platform. This is the difference between free and the plus session in Unacademy. In free, you'll get complete limited syllabus coverage, limited practice test, limited PDF notes. But in plus, you'll get complete practice set, unlimited practice set, complete syllabus, and unlimited PDF notes. These are our special class features. You can download the Unacademy app and attend all the special classes. The classes are completely interactive sessions. There will be polling for the learners. You'll never miss a class because you'll get the notification in time. You can download the lecture notes anytime and anywhere. You can access to the portal. You can download the digital notes for OPSC examination. These are the ongoing batch courses. Rakshak, it is a special foundation batch for Odisha Police examination. Lakshya, foundation batch for OCS prelims and mains. Fast track batch for OSSC prelims examination. Fast track batch on Odisha constable examination. So this is the pricing plan for Odisha PSC. You can use this referral code Samrat Live to get 10% discount on all your subscriptions. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ internal security discussion କରିବା ଗୋଟେ important topic internal security sorry left wing extremism discuss କରିବା. In the last class I discussed about कि एମାନଙ୍କୁ left wing extremism ବା leftist ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି. They are also known as Naxals. ଏମାନଙ୍କୁ Naxal ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ. ଏମାନଙ୍କୁ Maoist ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ. They are also known as leftist. ଏମାନଙ୍କୁ leftist ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ. So Naxal ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ ନା it originated in 1967 in the Naxalbari village. ये Naxalbari village ରେ start ହେଇଛି. କୋଉଠି Naxalbari village ନା in West Bengal ये start ହେଇଛି. It started in ଏମାନଙ୍କୁ Maoist ବୋଲି କୁହାଯାଏ because ଏମାନେ they are the followers of Mao Zedong. Because they are the followers of Mao Zedong. Then ଏମାନଙ୍କୁ leftist ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା because they oppose the government. Because they oppose the government. ସେମାନେ government କୁ oppose କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ government କୁ oppose କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ leftist ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଏମାନଙ୍କୁ leftist ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖାଯାଉନି ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ତ ଲେଖୁଛି. They are known as leftist. Naxalbari village ରେ originated ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ Naxal ବୋଲି କୁହାଯାଏ. Mao Zedong କହିବାର କାରଣ କଣ କହିଲି ନା because they are the follower of Mao Zedong. That is why they are known as the Maoist. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ Maoist ବୋଲି କୁହାଯାଏ. So ଏଥିରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ important. ଗୋଟେ ହେଲା why is left wing extremism is a threat? What is the history or origin of left wing extremism and why is it a threat? And why is it a threat? କୋଉ କଲର ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଦେଖିପାରୁନ ବ୍ଲୁ କଲର ତ ଏଟା ତ କ୍ଲିୟରଲି ଦିଶୁଛି ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲର ଏଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଟା ବ୍ଲୁ କଲର ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେଜିବଲ ଅଛି. Next time देखियो what is the reason behind spread of left wing extremism? What are the reasons behind spread of left wing extremism? So the first one is failure of government in the land distribution. Land distribution ने government रो failure कौन? In 1947 India got its independence. In 1947 India got independence. 1947 ने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेला. देन तापरे गवर्नमेंट
पूर्वरु जो जमींदारी सिस्टम थिला बा किछि लोक मानक पाखरे तमे गिनी कोएफिशिएंट देखिबा इन केस ऑफ इंडिया 90% ऑफ रिसोर्स इन इंडिया इज विथ 10% ऑफ पीपल and 10% of resource is with 90% of people is with 90% of people. So government was not able to actually distribute the national resources in a proper manner among all the communities. There was no distributive justice or there was no equity in the development. So that is why the people, those who are staying in the forest area, those who are staying in the dissected or isolated area, they had a feelings that the government's developmental model, they are left out of the government's developmental model. Government development to karuchi, but they are left out of this model. They are not included under this model. That's why they created a feelings among themselves कि government आमମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁନି, ଆମେ ପଛରେ ରହି ଯାଇଛୁ, government को ଆମ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର. Then there is a perception of people from the remote area. This was the perception of people. ଲୋକମାନେ government ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା. Then there was no political ventilation. Political ventilation ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, we approach the government. ଆମେ ହରତାଳ କରୁଛେ, ଆମେ ପଳେଇଲେ ରାଜରାସ୍ତା କୋଲ୍ହେଇ ପାରୁଛେ, बट एमानक पाखरे पॉलिटिकल वेंटिलेशन करिवार किछि उपाय नाही. पॉलिटिकल वेंटिलेशन ने बेसिकली कोन हुए, पॉलिटिकल वेंटिलेशन रहिले कोन हुए ना, वी कैन एक्सप्रेस आवर प्रॉब्लम्स और डिससैटिस्फाइडनेस, डिसकंटेंटनेस और डिसकंटेंटेडनेस टू द गवर्नमेंट. जदि पॉलिटिकल वेंटिलेशन न रहइबो, आमे मुह खोली परिबा नहीं. इफ यू डोंट हैव एनी वॉइस, जदि हम पाखरे किछि वॉइस नाही, ताले obviously it will erupt in a larger form. It will erupt in a larger form. So absence of the political parties, absence of political activities in the hilly areas, in the tribal areas, in the remote areas, because of no ventilation facility for their anger and dissatisfaction of people, left wing extremism gradually started growing in those areas. Then the next point is continuation of the caste based discrimination after independence. यदि आम देखा इंडिपेंडेंस पर हमको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया देखा मिलला. सो दोज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट और द कम्युनिटी बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, एमान मन फिलिंग्स आसला कि आम गवर्नमेंट अगेंस्ट जा, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ऑपरेस द कास्टिज्म अगेंस्ट अस. सो दैट वाज आल्सो कॉज. देन करप्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रे करप्शन, पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम मानकर फेल्योर, poverty eradication program मानकर failure, illiteracy, all these things combiningly gave birth to left wing extremism. बुझिला? left wing extremism पछरे कारण कौन थिला? है ना, illiteracy, corruption and caste based discrimination. एतिक बुझिला समझते क्लियर? तापर आगो बुझिबा. मुझे बर्तमान ये प्रॉब्लम कहीं, why is it a problem? In 1967, Naxal problem started in India. In 1967, it started in India, and in 1967, it was problem of a village. ये नक्सलवाड़ी village रा problem थिला in 1967. But जब हम बर्तमान देखिबा, this is problem of entire India. This is problem of entire India. Before 2004 रू ये ग्रुप अधिक सक्रिय है. केमती ना 2004 पूर्व छोट छोट आउटफिट गुड़ाक थे, बट इन 2004 दीटा बड़ आउटफिट, नक्सल आउटफिट, गोटे PWG पीपल्स वार ग्रुप. इट वाज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं साउथ छत्तीसगढ़ रे ये प्रेजेंट थिला. आ गोटे थिला माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, MCC माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर. इट वाज प्रेजेंट इन बिहार, देन झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. 2004 रे ये दीटा पार्टी मर्ज करिगले. Both the parties they merged to form CPI, Communist Party of India M, Maoist. CPI M formation kale, and now CPI M is responsible for 95% of Naxal killings and 90% of Naxal incidents in India. And 90% of Naxal incidents in India. So this merger provided a political thrust or a movement. This movement a national upthrust. आंध्र प्रदेश CPI-M को बैन करदेला, तापर छत्तीसगढ़ बैन करदेला, देन मुंबई अटैक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैन करदेला. सो CPI-M इट इज अ बैंड पार्टी
बैंड पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कहवा सो ई सीपीआईएम रो गोटे आर्मी विंग अच्छी से आर्मी विंग को कौन कहा जाए ताको जे पीपल्स लिबरेशन ऑफ गॉरिला आर्मी पीपल्स लिबरेशन ऑफ गॉरिला आर्मी से माने मते सेमानकर गोटे पब्लिकेशन मध्य अच्छी व्हाट दे पब्लिश अ मैगजीन से मैगजीन ना होची जंग मैगजीन तो ना होची कोन ना जंग मैगजीन है जूम यू हैव द ऑप्शन टू जूम इट निजे जूम करि परियो निजे अनुसार जति बड़ दरकार एमानकर एम कोन ना एमानकर एम होची टू पेंट इंडिया इन रेड कलर एंड रेड फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट बाय 2050 कौन कही रेड फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट बाय 2050 नाउ द पॉइंट इज aku what are the steps that can be taken to tackle left wing extremism left wing extremism को tackle करिया पे हमें कौन कौन step नहीं परिवा ना the first thing which is required is a security intervention ने हमें कौन कर परिवा ना we can fulfill the special needs of security forces and police forces in the extremism area and we can do modernization of the police forces modernization कहला हमें कौन बुझे we can provide bulletproof jacket modern technology night vision camera devices motivation incentive better appraisal system functional autonomy ये सब हमें provide कर परिवा police force को so security intervention then developmental intervention ने हमें development कर परिवा डेवलपमेंट रे बेसिकली दी प्रकार डेवलपमेंट करि परिया फिजिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट रास्ता घाट पानी बिजुली 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करि परिया इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज रेलवेज प्रोवाइड करि परिया एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करि परिया एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करि परिया लिटरेसी लेवल को बढ़िया पई एजुकेशन रो जते गोटे स्कीम अछि जेमति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान ये स्कीम मान को इम्प्लीमेंट करि परिया so government ओडिसा रो मध्ये डिफरेंट स्कीम अछि लाइक अन्वेषा स्कीम एंड ऑल अदर्स ताको इम्प्लीमेंट करि परिया देन सिक्योरिटी इंटरवेंशन एटी आ गोटे पॉइंट मध्ये अछि जेटा हम देखुचे सीआरपीएफ रो गोटे स्पेशल विंग अछि जहा को कहा जाय कोब्रा सीआरपीएफ रो अछि गोटे स्पेशल विंग ताको कहंती कोब्रा तार फुल फॉर्म होछि कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन देयर आर 10 battalion सीआरपीएफ पुलिस फोर्सेस those who are well trained for guerrilla warfare and jungle war and they are deployed in the dense forest to fight against Naxals. So there is a CIAT counter insurgency anti-terrorist school ये गोटे specialized training for the security forces for the counter insurgency and anti-terrorist operations. It means ensuring rights of the local people. जो local tribal अछंती एमानक rights को ensure करिया all the rights there is a constitutional rights violation of constitutional rights legal rights fundamental rights we have to ensure all the type of rights to the local community or to the tribal community then providing good governance रे हमें कौन कौन को फैक्टर को इंपोर्टेंस दबा ना efficiency effectiveness accountability transparency responsiveness people friendly government better input to output ratio so ये सब होला good governance we can ensure good governance. Then the most important is the solution for the public perception management कहला हमें कौन बुझुचे परसेप्शन अर्थ होची हमें कौन भाबुचे आउ जनक प्रति ताको परसेप्शन कहंती सो पब्लिक परसेप्शन अर्थ होची पब्लिक कौन भाबुची काहा को ना गवर्नमेंट को पब्लिक रो गवर्नमेंट प्रति व्यू कौन सो द गवर्नमेंट शुड टेक all the affirmative steps to create a better perception in the mind of the common people देखा जाउनी जहाँ को चेक कर निजर इंटरनेट कनेक्शन मो पाखे ऑलरेडी ये गोटे यूट्यूब स्क्रीन अच्छी जो थे कंप्लीटली क्लीयरली सब जिन देखा जार इंटरनेट कनेक्शन टी कमजोर थी तो देखिपार न चेक कर टी कनेक्शन चेक कर है सो परसेप्शन मैनेजमेंट अर्थ हो द गवर्नमेंट शुड टेक ऑल द अफर्मेटिव स्टेप्स टू क्रिएट अ बेटर परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल सो जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो आम कौन सल्यूशन प्रोवाइड करुचे कौन चैलेंज किसी गोटे प्रोब्लेम सल्यूशन प्रोवाइड करुचे दैट शुड बी इन अ डेमोक्रेटिक वे सो वी शुड एक्सप्लोर फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज to start peace talk with the Naxal leaders. We can start
changing the people's perception in those region, we can develop the rights of the local people बा good governance of feelings, good governance आमे promote करि परिबा, developmental intervention जेमति कहली developmental intervention करि परिबा, socio economic development ensure करि परिबा in this region. So this is a short discussion on the left wing extremist बा नक्सल आमे जाको कहूचे बा जाको माओवादी बोली कहूचे, या ऊपर किछि डाउट अछि जहा जे आमे डिस्कशन कले. इंटरनल सिक्योरिटी रो कंप्लीट कोर्स अनएकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म रे मु पढै छी. अप्रोक्सीमेटली 15-20 सेशन अच्छे से तो सब टॉपिक से कवर कराई, प्रत्येक टॉपिक पढ़ाई. एनी डाउट फ्रॉम टुडे सेशन? आज क्लास रो किसी डाउट पचारे? एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणे डिस्कस करवा इंटरनल सिक्योरिटी रो अदर एस्पेक्ट्स जेमति जम्मू काश्मीर इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक ऊपर मु डिस्कस करबी इन द अपकमिंग क्लासेस. ठीक अछि, जहाँ पढ़िले आज आम समस्ते पढ़ो, जदि डाउट हुए मत नेक्स्ट क्लास रे पुणी पचार, यदि किसी डाउट आसे पुणी नेक्स्ट क्लास रे पचार. So let's wind up the session. That's all for this session. We'll discuss more in the next class. Thank you very much.